Hi everyone, I am Arshdeep and welcome back to your logical reasoning sessions. Today the topic that we're going to discuss are cubes and calendars. Now these are some very interesting topics and let's see how we have to solve the questions related to them. Okay, first of all let's talk about cubes and certain basic rules related to solving these questions about cubes. Now let's start with the construction. Now I am going to take like a very basic cube of this dimension. Okay, so I am talking about a basic cube and I am saying that this is a 3 into 3 into 3 cube. So this is the dimension. So now what do I have to do is that I have to divide this cube into these many sections because वहाँ पर जितने भी questions होते हैं LR section में ये cube से related, you are mostly asked about the painted sides that the cube is painted from this several sides, from all of the sides or from a particular side or something, and then you have to tell that which of the sides are painted, how many cubes, smaller cubes can you cut, and all of those questions related to it. But it's imperative for you to first understand as to how this cube can be broken down further. So let's see. So when I talk about this cube, now I want you to be really imaginative here because that is going to help. Now first when we talk about cubes, let me just change the color so that it becomes a little more clear. Okay, so I am going to break it down like this and like so. So now here, obviously, because we're drawing it, so it might seem clumsy, but try and imagine that this is the way that this particular cube has been cut. And now we are talking about the fact that now we're taking this cube in our hand and we're painting it from all the sides. Once we've painted the bigger cube, we are cutting it into 3 into 3 into 3 dimension. So now when we're cutting it, we get some smaller cubes. So now we get some smaller cubes, and then first of all, the first type of cube will be a central cube. Now the central cube is this one. Okay, so this is a central cube. Now what do you think about this central cube? And please again be imaginative and think that once this cube has been painted from all the sides and I have cut it into these many pieces, I take out this particular piece. This is the central one. So what do you think about this particular piece? This central cube, how many sides are painted? If I take this out, so obviously एक ही side जो थी वो outer side थी और बाकी जो है वो inside था, तो इसलिए इस cube की सिर्फ एक side painted है. So one side is painted. And now next up I have the other kind of cube which is a middle cube. So middle cube would be this one. So let's talk about this particular cube. So ये वाली cube को मैं middle cube कहती हूँ because ये बीच में आ रही है. Now this middle cube, if you see, this has been painted. Now this particular piece will be painted from this side as well as from this side. So this is the middle cube and this is painted from two sides. Okay. Then I have the third category which is a corner cube. So talking about this one, ये वाली जो cube है, ये इस side से भी painted है, इधर से भी, इधर से भी. So this is my corner cube and this is going to be painted from three sides. Alright. Lastly, एक अंदर की cube होगी जो इसके नीचे यहाँ center में आएगी. There will be an inner cube जो कि बिल्कुल भी painted नहीं होगी. That means it will be painted from zero sides. So this kind of a cube is called an inner cube. Now here if we talk about this particular one, we will be able to see कि ये जो central cube है ये हर side पे एक होगा. So we know that there are 8 faces. So obviously you will have this particular center. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So you know that there will be how many cubes. So you can calculate it. Now there is one there's a set of formulae which I give you for these, and here you can put the formula, use this formula and find it for any n. Now n is going to be the dimension.
So for example, यहाँ पर जो dimension है वो 3 into 3 into 3 है, so that means your n is 3. So the formula here would be that first up, यहाँ central cube के लिए the formula is 6 into n minus 2 square. Alright, then for middle cube, it is 12 into n minus 2. Then for three sides or the corner cube, we know that no matter what the dimension is, corners जो हैं वो कभी change नहीं होंगे. So no matter how big or small the cube is, the number of corner cubes is always going to be 8 only. 1, 2, 3, 4 and 4 on the other side. So 8 corner cubes for any dimension. And in a cube, the formula is n minus 2 whole cube. There's a last thing, which is how many times do we have to cut it? The number of cutting, or how many times do I have to cut this bigger cube to get this dimension. So number of cutting, and it is 3 into n minus 1. Okay, now be very careful that when I am using these formula, these are just an idea of reference. Now this particular formula cannot be applied everywhere. And why? Because this particular set of formulae is only applicable when you have a cube which is open from all sides and it is painted from all sides. So in a lot of questions you will see that the cube is placed against the wall, or cube is placed against a corner and it is covered from 3 sides, 2 sides. So that in that particular case, these formula won't be applicable. But these are applicable in the case where a cube is painted from all the sides. Okay, so let's use these formulae and try and solve a very simple question. Okay. So the question is that a solid cube is painted red on all the sides and then it is cut into 1000 identical cubes. Now then there are certain questions here. So first of all, हमेशा जब भी cube से related question होगा, it will be very easy to identify because जो भी number होगा cubes, it will be a cube of some number. So make sure that you know all the cubes up until 10 or 12 सारे numbers के cubes बताओ. So this obviously is a very easy one, and right away we can see that it is 1000. So जो हमारा n है वो कितना होगा 10, ताकि dimension हो जाएगी 10 into 10 into 10 which is 1000 pieces. So एक बड़ा cube है जिसे red paint किया गया है on all sides. So then it is cut into 1000 identical pieces. So I know my n here. Now first question is, what is the minimum number of cuts required to do so? So as I explained that there are number of cuts, कि आपको कितने cuts करने हैं ताकि आपको 1000 identical cubes मिले. So the formula for that is going to be 3, and then you have n minus 1. So it is 3 and 10 minus 1. So here quickly it is 9 and the answer is going to be 27. Alright, so this is the answer for A. Then for option B, how many of the smaller cubes have all the 3 sides painted? So 3 sides painted, as I always told you like earlier, that 3 sides का मतलब है corner cube, और corner cube जो है वो कभी change नहीं होती no matter what the dimension. So the corner cubes are always going to be 8 only. Okay. Then third part is how many of the smaller cubes have 2 sides painted. So 2 sides painted के लिए the formula is 12 into n minus 2. So quickly 12 into 10 minus 2, which is 10 minus 2 is 8 and 8 12s are going to be 96. Alright, next up we have how many of the smaller cubes have one side painted. So one side painted is 6 into n minus 2 square. So one side painted, 6 minus. So this is going to be 6 into 10 minus 2 whole square. So 6 into 10 minus 2 is 8. 8 square is 6. And here again it's about calculation, so you get 384. Lastly, we have how many of the cubes have no side painted. So no side painted, we have
n minus 2, this is the part, n minus 2 whole cube, and here we have, that means 10 minus 2 ka whole cube, 8 cube, and that gives us 512. So this is the way to solve easy questions. So if the questions are very direct, you can directly apply these kind of this particular set of formula that I already explained. So let's go ahead to another different topic that we'll discuss today. And the topic that we have to discuss is calendars. This is a very interesting topic, and there are several ways that you will be able to see. So a lot of different teachers teach this in a different way, and even when you look up online or some books, you'll be able to find a lot of different ways as to how you can solve the questions related to calendars. For example, they give you a random date and you have to find out that what day was it on that particular day. So that way we have these kind of questions. So I'll help you by solving this. Now first up, there are certain things that you have to understand. Firstly, we have odd days. Okay, what do you mean by odd days? Now odd days is जितने भी हमारे एक वीक के अलावा एक्स्ट्रा दिन होते हैं उसे हम ऑड डेज कहते हैं. सो एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं. सो 7 डेज के बाद जितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं odd days. So any extra days after your 1 week's time is called odd days. Okay. Now next up we talk about leap years. Okay. लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो होता है जो हर 4 साल में आता है, या फिर जिसे हम कहते हैं एवरी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, दैट्स अ लीप ईयर. ऑल राइट, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट एवरी सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि हर सेंचुरी जो है ऑब्वियसली वो 100, 200 इस तरह से 0 पे एंड करती है. जो 0 पे एंड करेगा वो ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल है, बट in that case it's an exception because हर सेंचुरी जो है वो लीप ईयर नहीं होती. एवरी 4th सेंचुरी वो होती है लीप ईयर. सो फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा इस कैलकुलेशन को और इस कॉन्सेप्ट को ईजी रखने के लिए वी ऑलवेज थिंक कि ईयर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं. तो 100, 200, 300, 400, तो ये 4th सेंचुरी आई तो लीप ईयर वाली सेंचुरी. सो दैट मीन्स ये 4th वाली जो आई, दिस इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर वाली सेंचुरी. ओके, लेकिन ये और ये जो है ये हमारे लीप ईयर नहीं है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर डिविजिबल बाय 4. ओके, ऑल राइट. सो यहाँ पर अगेन द डिफरेंस इज दैट लीप ईयर के अंदर है 366 डेज एंड ऑर्डिनरी ईयर के अंदर है 365 डेज. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव ऑर्डिनरी नॉर्मल ईयर. ऑर्डिनरी नॉर्मल ईयर के अंदर क्या है? जो भी ईयर नॉर्मल है या फिर लीप ईयर नहीं है वो है हमारा एक ऑर्डिनरी ईयर जिसके अंदर है 365. ठीक है ना, ये बेसिक हमने कैलकुलेट कर लिया. एंड व्हाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वी हैव टू नो द नंबर ऑफ ऑड डेज. नाउ नंबर ऑफ ऑड डेज की बात करते हैं. सो देयर इज समथिंग विच आई वुड रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू शुड नो, एंड ये सब आप चाहे मेमोराइज कर ले, ऑब्वियसली दीज ऑल हैव एक्सप्लेनेशंस टू देम, बट एज ऑफ नाउ आई विल टेल यू व्हाट दीज ऑड डेज आर, एंड उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर ऑफ ऑड डेज. So quickly make a note of all of these. Firstly, एक normal year के अंदर, एक normal year के अंदर होता है 1 odd day. Okay, then 1 leap year के अंदर होता है 2 odd days. Then in 100 years, अब हम इकट्ठे 100 years ले रहे हैं, 100 years के अंदर होते हैं 5 odd days. 200 years के अंदर होते हैं 3 odd days. ओके, 300 years के अंदर होते हैं 1 odd day, एंड 400 years के अंदर होते हैं 0 odd days.
ओके, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग रिलेटेड टू दिस इज कि कौन से दिन के साथ कौन सा ऑड डे कॉरेस्पॉन्ड करता है. सो संडे में है 0 ऑड डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो संडे में है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 and that is why it starts with 0 क्योंकि जैसे ही 7 होगा तो that means our week gets completed and odd days as I explained are extra days. तो इसलिए these are the number of odd days. So now this is what you have to remember and किस year के अंदर किस day में कौन सी चीज़ associated है कितने odd days से, and then we'll quickly calculate and use this in our questions. So let's go ahead. Okay, so now we have a question that's very simple and we just have to calculate कि 28th May 2006 को क्या date है. So we are going to use the concepts that we've just discussed of the number of odd days. So all you have to memorize is कि कितने years के अंदर कैसे odd days हैं, and now I'll tell you how to use that knowledge and apply it here. So first of all, let's start by breaking it up. सबसे पहले हम start करते हैं इससे, हमारी सेंचुरी से या 2006 जो हमारा ईयर है उससे. सो उसके अंदर सबसे पहले 2006. ओके, सो 2006 के अंदर अभी हम 2006 चल रहा है, ठीक है. सो दैट मीन्स अभी हम 28 मई 2006 की बात कर रहे हैं. सो मे इज़ अ पार्ट ऑफ दिस करंट ईयर 2006. सो 2006 का मतलब है कि 2005 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये ऑन गोइंग ईयर है 2006 का, ठीक है. तो अब जो है हम इस 2005 ईयर को पहले स्प्लिट करते हैं. सो 2005 ईयर को अगर मुझे स्प्लिट करना है, सो हाउ कैन आई डू दैट? नाउ आई कैन डू दैट एज 2000 ईयर्स, ओके, एंड देन आई हैव 5 ईयर्स. नाउ इसको रीज़न क्या है कहने का कि मैंने आपको जैसे भी समझाया था लीप सेंचुरीज के बारे में, ठीक है. सो आई टोल्ड यू कि वी कीप इट वेरी सिंपल एंड थिंक कि ये 0, 100 पहले 0 ईयर्स, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स एंड सो. तो उस हिसाब से जो हमारी लीप सेंचुरी वाले ईयर्स हैं वो हमेशा 400, 800, 1200 जो 400 के मल्टीपल्स हैं वो हैं. तो ऑब्वियसली 2000 जो है वो भी मेरा एक लीप सेंचुरी ईयर का मल्टीपल है. सो इसलिए मैंने उसे इस तरह से लिखा. सो 2000 और 5 ईयर्स. अब इससे मेरी एडवांटेज क्या हुई ये लिखने की कि 2000 जो है वो एक लीप सेंचुरी वाला ईयर है. इसका मतलब उससे रिलेटेड ऑड डेज कितने होंगे? 0. अब जो है हम बात करते हैं 5 ईयर्स की, ठीक है. 5 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डेज होंगे? अब 5 ईयर्स को मैं डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ कि 5 साल के अंदर तो एक बार ही लीप ईयर आएगा बिकॉज ऑब्वियसली इट कम्स इन 4 ईयर्स. सो इन 5 ईयर्स आई विल हैव 4 नॉर्मल ईयर्स एंड 1 लीप ईयर. सो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर नॉर्मल ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं? नॉर्मल ईयर के अंदर होते हैं 1 ऑड डे ईच. तो ये हो गया हमारा 1 ऑड डे इंटू 4, तो 4 नॉर्मल ईयर. एंड एक लीप ईयर के अंदर कितने होते हैं? 2 ऑड डेज. तो एक लीप ईयर और 2 ऑड डेज. तो यहाँ पर टोटल कितने ऑड डेज आ गए? 4 एंड 6. सो यहाँ पर है मेरे पास 6 ऑड डेज. सो 2000 ईयर्स में है 0 एंड 5 ईयर्स के अंदर मैंने कैलकुलेट कर ली, आ गए 6 ऑड डेज. तो यहाँ टोटल आ गए 6 ऑड डेज. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली नाउ आई मूव अहेड. अब मैंने जो है अपनी सेंचुरी कैलकुलेट कर ली है. नाउ आई हैव टू सी 28th May. नाउ 28th May का मतलब है कि ऑलरेडी मेरा जनवरी निकल चुका है, मेरा फरवरी निकल चुका है, मेरा मार्च निकल चुका है, मेरा अप्रैल तक निकल चुका है. नाउ आई एम लेफ्ट विद मे जो चल रहा है, ठीक है. जैन में कितने डेज निकले? 31. फेब में कितने डेज निकले? यहाँ पर ऑब्वियसली बिकॉज ये 2006 है, लीप ईयर नहीं है तो इसलिए 28 डेज. मार्च में निकले 31, अप्रैल में निकले 30 और अभी मई चल रहा है और मई की कौन सी डेट है? 28. सो 28th May इज राइट नाउ करंटली गोइंग ऑन.
तो अब यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ डेज क्विकली कैलकुलेट कर लेंगे. सो वंस यू कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज डेज, तो आपके पास आ जाएंगे टोटल 148 डेज. अब 148 डेज को जब आप डिवाइड करोगे 7 से ताकि उसके नंबर ऑफ वीक्स बना सको, तो आपके पास आ जाएगा 21 वीक्स प्लस 1 डे. तो इसका मतलब है कि 21 वीक्स पूरी हो गई और एक एक्स्ट्रा दिन निकला. दैट मीन्स वी हैव 1 ऑड डे. ठीक है, तो हमने हमारी सेंचुरी से और हमारे डेट से सारे के सारे ऑड डेज निकाल लिए हैं. सबसे पहले मेरे पास आए थे 6 ऑड डेज और अब मेरे पास आया है 1 ऑड डे. तो मैं टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करूँगी. टोटल ऑड डेज में मेरे पास आए 6 प्लस 1 विच इज़ गोइंग टू बी 7. एंड एज आई टोल्ड यू कि 7 ऑड डेज नहीं होते बिकॉज अगेन इट स्टार्ट्स टू कंप्लीट अ वीक. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर हो गए 0 ऑड डेज. नाउ 0 ऑड डेज से कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा दिन होता है? इट इज अ संडे एंड दैट इज योर आंसर. 28 May 2006 was a Sunday, and to check that you can always refer your calendar. So as of now it might be seeming a little tedious and complicated, but once you do a couple of questions you will be very well versed with it, and even your speed is going to increase. I hope you were able to understand these two topics that we did today. I'll see you in the further coming sessions. Thank you so much.